All right. So these are certain articles that we are going to discuss. All right. The important circulars that we have seen from the month of March till October. The important circulars with respect to important for your both RBI examination. All right. As well as SEBI examination and other IBPS examination. Okay. Uh, yeah. Okay. The first article that we will cover regarding the priority sector lending, and I have also already gave you the supplemented notes regarding this, that RBI has announced a major changes in this priority sector lending updates, right? So everyone, you must be aware about the priority sector lending. क्या है भाई इंडिया में क्या होता है कि there is a guidelines by the RBI that financial institutions, right? Banks, it includes the foreign banks as well. Those foreign banks having branches. How many branches more? Yeah, it will be uploaded in Panchasutra batch. Don't worry, Amit. Okay. How many? Yeah, very good, Sridhar. The foreign banks having more than or equal to 20 branches in India, they are also being this guidelines is also applicable to those foreign banks, foreign entities as well. Okay, they have to mandatorily lend certain targets. Okay, it is said by RBI that up to this much target you need to support the weaker section of the society or the other preferred section of the society like agriculture. You can see here the top priority sectors. Okay, domestic banks, commercial banks, and foreign banks having 20 branches or more than 20 branches have to prioritize their lending. 40% of the total lending they have to prioritize towards the top priority sectors, which can be further bifurcated. Out of this 40%, agriculture is denoted like 18% to agriculture only, right? Micro enterprises 7.5%, as well as weaker section 12%. Okay, weaker section, you can see here weaker section like for SCs, ST communities, right? Women entrepreneurs. So weaker section, this 20% of the total lending should be allocated to weaker section. All right. For foreign banks with less than 20 branches, 40% up to 32% as export credit, minimum 8% as other priority sectors. All right. Separate bifurcation for agriculture micro, it is not given for those foreign banks having less than 20 branches. Yes, yes, Ruchi, we will definitely upload this in Telegram group as well. This PDF actually got revised from last PDF. All right, so we will definitely upload it. Okay. For the regional rural banks, RRBs, since these banks are located in rural areas only, rural Indias only, right? And these are actually these banks in order to support the rural economy of our country. Therefore, the priority sector, see the priority P under the PSL, they have to lend at least 75% towards the PSL only, right? 75%, because these are very much dedicated banks located in the rural areas in order to boost the economy of rural India. All right. Therefore, the PSL norm would be more 75%. Agriculture again 18%, 7.5 for micro enterprises, and for weaker section C, we in general parallels it is 12%. Now it is 15% for weaker section. All right. Now it is 15% for weaker section. Small finance banks के लिए क्या है भाई? Small finance banks against to support which section of the society? Small enterprises, right? MSME sectors, तो उनके लिए भी again under the PSL norms. Okay, this is 75%, 18%, 18%, and then 12%, right? So this is the bifurcation. This is the bifurcation. Sub targets under priority sector lending. Now let's see कि ये जो है ना, why this announcement is important. This PSL announcement is important, which is going to be effective, which had already got effective from 1st of April 2025. How it becomes important. See the key changes in these guidelines, in guidelines of these PSL norms.
enhance the housing loan limits. Housing loans now qualify for PSL classification under the three categories based on population size. Okay, under the three categories based on population size, right? Enhance yes, Arvind, 60%. Yeah, SFBs के लिए 60% है. Yeah, it is 60. Okay, by mistake it was 75%. Just I will make correction in the PDF as well. It is just 60%. Okay, it is just 60% for SFBs. पेमेंट बैंक्स के लिए भी कुछ टारगेट है क्या? जस्ट टेल मी, पेमेंट बैंक्स के लिए कुछ टारगेट है? हाँ, इज देयर इन टारगेट फॉर पेमेंट बैंक? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. पेमेंट बैंक्स के लिए पीएसएल का टारगेट है? यस, वेरी गुड. देयर इज नो सच टारगेट फॉर पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स जो है ना वो दे आर नॉट कमिंग अंडर द दिस पीएसएल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई. ओके, और एसएफबीस के लिए राइटली पॉइंटेड आउट 60%. ओके, वेरी गुड. It will be corrected in the PDF as well. No, don't worry. Right. तो हम लोग क्या देख रहे थे कि housing loans limits. Okay, they can be qualified for the PSL classification under the three categories based on the population size of that particular city. Right. The cities with population above 50 lakhs, rupees 50 lakh criteria is there. The cities between 10 to 50 lakhs up to 45 lakhs. Up to rupees 45 lakhs will be classified under the PSL, and cities having less than population of 10 lakhs, 35 lakhs for cities with population below. Additionally, PSL limit on loans extended for the repair of existing homes. Repair of existing homes have been scaled up to 10 to 15 lakhs from 6 to 10 lakhs. Okay, so जो नए जो changes हैं, these figures you need to keep in mind. This 35, okay, 45 then 50 lakhs जो है, right, lakhs for up to 10 lakh population के लिए, 10 to 50 lakhs population के लिए, और more than 50 lakh population cities के लिए, right, brought under the newly brought under the PSL classification. और repairment के लिए तो ये वाला portion important नहीं है, but ये this can be important, right. Renewable energy projects के लिए again very important. Renewable energy project very important because आरबीआई का सिलेबस में है यू हैव सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट. तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज हैव एक्सपेंडेड एलिजिबिलिटी विथ लोन्स अप टू 35 crore. अर्लियर इट वाज जस्ट 30 crore. नाउ दे कैन procure the loan up to 35 crore under the PSL category, under the PSL category, for which for the development of solar and biomass equipments and street light systems, and 10 lakh they can procure for individual households under the renewable energy projects. Okay, जैसे individual households के ऊपर में solar rooftop लगाना है, right, solar rooftop, तो for that you can procure up to 10 lakh, okay, under this renewable energy projects. Clear? Clear to everyone? Farm loans. Farm loans के लिए for individual farmers up to 90 lakhs. Corporate farmers, those are involved in commercialization of farming, commercial farming. Okay, एक ही तरह के crops को grow कर रहे हैं in order to sell it out, not for personal consumption. तो उनके लिए क्या है भाई? Up to 4 lakhs. And farmer producer organization, this is 10 crore. This is important. For FPOs it is 10 crore. कुछ facts हैं that you have to memorize, right? So I am pointing it. In fact, I have highlighted it by yellow color. Okay, at least look into those facts. ठीक है, clear to everyone? FPOs के लिए up to 10 crore. ठीक है? Farmer loans that can be which is classified under the PSL new guidelines. Education loan 25 lakhs. यही जो एजुकेशन लोन्स है यही सब है उसका पार्ट, राइट. ये वीकर सेक्शन का पार्ट्स है ये सब. ओके,
ट्रांसजेंडर weaker section, joint liability groups weaker section का पार्ट है, are eligible for loans under the PSL. स्पेसिफिक नहीं है कितना अमाउंट तक ले सकते हैं, बट दे आर आल्सो एलिजिबल टू गेट द लोन्स अंडर द PSL कैटेगरीज. क्या फायदा होता है भाई? व्हाट इज द बेनिफिट इफ दे विल अवेल द लोन अंडर द PSL कैटेगरी? इज देयर एनी बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट लोन? टेल मी, क्या बेनिफिट होगा? I want you to involve in the class as well. I don't want one-to-one like one-way communication only. Benefit होगा? Yes, very good. Reduced interest. Okay. ये RBI का norms है. Priority sector means, as the name denotes, priority sector. Those sectors are being prioritized by the RBI and by the DFS, by the Ministry of Finance itself, that these areas need to be looked into, right? In order to make the inclusive development for financial inclusion, right? Artisan and women borrowers up to 2 lakhs. Earlier it was 1 lakh. So artisan and women borrowers जहां पे term आता है, this becomes important up to 2 lakh. Okay. Revised target for urban cooperative banks. Urban cooperative banks need to allocate 60% of adjusted net bank credit or credit equivalent of balance sheet exposures to priority sector lending. कितना है UCBs के लिए? They need to allocate 60% to the PSL. UCBs के लिए urban banks, UCBs have to allocate 60% to 60% like small finance banks, है ना? 60% to PSL. ठीक है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? राइट. नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सारा क्लियर हो गया आप लोगों को. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, why it is important? You can also expect a mains question from this priority sector lending in your phase 2 examination. All right, because this is very updated guidelines and this is very important, and we are expecting one question from this guideline. Okay, so just try to memorize the important facts like this one: 35, 40 and 50 lakhs based on the city population. All right, then for renewable energy project, this 35 crore. For solar and biomass equipments and individual level 10 lakh. Then for farmer producer organization, this 10 crore. Artisan and women borrowers can borrow up to 2 lakhs. और UCBs के लिए तो था ही, like 60% of their adjusted net bank credit to PSL they have to allocate. All right. चलो next circular, next important article में हम लोग आते हैं. With respect to lead bank scheme, self-help group bank linkage and national rural livelihood missions and SC/ST credit facilities. Okay, so one by one we will see. First of all, self-help group bank linkage and NRLM. Okay, the RBI has issued the master circular for Deen Dayal Yojana National Rural Livelihood Missions, पूरा नाम है इसका. Okay, with detailed framework of this circular is being issued on 1st of April. Okay, with new updates on 9th of October. Just 2 days before, we got a new update from NABARD with respect to this NRLM. Okay, Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Missions के लिए new updates has been added in this PDF as well. Right. Let's see the key provisions that has been announced recently. RBI and NABARD have updated guidelines that allow for collateral free loans to, देखिए मैंने ये portion yellow किया है ना, it means the whole all the 3 lines is important. ठीक है? Clear? See, RBI and NABARD, they are providing collateral free loans, means you don't have to keep any sort of mortgages. किसको ये फैसिलिटी दिया है? टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. द ग्रुप्स, द एंटिटीज consist of 15 to 20 members who used to help each other, right? To up to 20 lakh. Up to how much? 20 lakhs. For loans between 10 to 20 lakhs, no lien is to be marked against the self-help group saving account. कोई lien नहीं होगा
फॉर लोन्स बिटवीन, अगर 12 लाख का लोन लिया, 15 लाख का लोन लिया, 18 लाख का लोन लिया, तो उसके लिए कोई भी लियन नहीं मार्क होगा, राइट, अगेंस्ट द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेविंग अकाउंट। उनका एक कलेक्टिव अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट बैंक में, और दे कैन गेट ए कोलैटरल फ्री लोन्स without putting anything in mortgage up to 20 lakhs. So this you need to remember. ठीक है, collateral free up to 20 lakhs. नेक्स्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन। क्या फायदा मिलेगा भाई? इंटरेस्ट रेट क्या होगा लेंडिंग रेट पे? जो 20 लाख लिया उन्होंने, 7% फॉर द लोन्स अप टू 3 lakhs एंड एन एडिशनल सबवेंशन ऑफ 3% इज अवेलेबल फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। अगर उन्होंने बहुत अच्छे से रीपे कर रहे हैं, वो दे आर रीपेइंग देयर ईएमआईज प्रॉम्प्टली, एक्टिवली, देन दे विल गेट एन एडिशनल सबवेंशन ऑफ 3%, ओके, 3%, bringing the effective interest rate down to 4% in certain areas, certain districts. Okay, तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं ध्यान में रखना है, but you need to keep in mind this 7% loan up to 3 lakhs and an additional subvention of 3% if they are paying promptly. All right, if they are paying promptly. Third point, credit facilities for members. See here, individual members for well-performing self-help groups can receive loan up to 10 lakh for viable individual members of that. Suppose this SSG is consist of 15 to 20 members, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप का परफॉर्मेंस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीपेमेंट परफॉर्मेंस, if they are performing very well, so individual members of that self-help group can receive a loan up to 10 lakh, can receive a loan up to 10 lakhs for, in order to set up their enterprises. A minimum overdraft facility of rupees 5,000 is also mandated for every women self-help group member with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account. ठीक है, around 35% of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account is inactive as of now. All right. Therefore, such type of measures are being taken so that those accounts can be activated. Okay. They can have a trust over the India's regulatory system, the financial systems. Okay. तो women self-help group के लिए the minimum overdraft facility उनका कितना है? 5,000 का. It is also mandatory. Okay, promotion of your enterprises. RBI and NABARD encourages bank to provide credit to producer groups and producer organization to help the self-help group members get better market accessories for their product. ठीक है, तो ये तो एक common point हो गया. Here you need to remember this collateral free loan up to how much? Up to 20 lakhs. Interest subvention 7% plus 3% in case of good repayment, and the credit facilities for individual member for well-performing SSGs, it is up to 10 lakh. ठीक है, in order to set up the enterprises. ठीक है, this you need to remember with respect to, and this is very much newly updated on 9th of October only. Therefore, you need to keep this in mind. If you will not get any question in phase 1, then you will definitely get question in phase 2 examination of your RBI और अदर रेगुलेटरी बॉडीज में तो आएंगे ही जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस. नाउ कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल, थर्ड सर्कुलर, हमने देखा था क्रेडिट फैसिलिटीज टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का देख लिया, बैंक लिंकेजेस. अब वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या क्रेडिट फैसिलिटीज आरबीआई ने अनाउंस की, राइट. तो सी अ मास्टर सर्कुलर पब्लिश्ड ऑन 16th of June with respect to SCs and STs. Key points of this master circular that we have to consider. The first, the banks are क्यों कर रहा है भाई? Why credit facilities are being made available for SCs and STs communities? These are weaker section of the society. ठीक है, तो उनको we have the banks, the RBI is the responsibility of regulatory body, the master regulatory body of our country to look into those weaker section of the society as well, so that we can attain the financial inclusivity in real sense, not on paper only, right? For that only, RBI is trying to consider to bring those
disadvantageous section of our society into the mainstream of our country, mainstream of India's financial services. Therefore, RBI came up with this master circular. ठीक है, clear है, clear with the purpose. Okay, now at least write yes or no. All right, सब लोगों को clear हो रहा है चीजें? Am I going too fast or it is good, bit good? All right. Banks through district level consultative committee, DLCC, right? Banks through district level, क्योंकि अगर इनका analyze करना है that in that particular, तो ये like it cannot be possible at central level कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एससीज एसटीज का कंडीशन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल एट therefore district level consultative committee is formed which will collaborate with the government agencies in prioritizing the credit supports to SCs and STs while promoting the self-employment and development scheme through district industry center. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, दिस डीएलसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमिटी विल बी देयर along with the government agencies. It will look into give the data, वो अगर analyze करेंगे of that particular district, the condition of SCs and SCs, and accordingly prepare the data, and accordingly this government organization will try to support those communities. Special focus on village or localities with high SC and ST population will be driven to promote the financial inclusion in those sections, right? Bank will take active steps to implement and enhance the core values of this master circular, like actively support the SC/ST borrowers, releasing subsidies to those applicants, extending the institutional support to National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and National Scheduled Caste Finance and Development Corporation, and loan application rejection will be decided at higher authority. ऐसा नहीं कि बैंक के junior authority पे ही you will get the like authority to reject the application of that particular SC/ST applicants. No, it will be decided at higher level. All right, ताकि वो exploitation would not be trickled down at the bottom up level. ठीक है, और वो proper put and check में रहे. Several major government schemes will be provided reservation against the credit subsidies to SC. कौन-कौन से major schemes ये आपको ध्यान रखना है. दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, first one differential rate of interest scheme, and the third one is credit enhancement guarantee scheme for scheduled caste. So these three schemes will be provided against the credit and subsidies to SCs and STs. ठीक है, तो these are sir major guidelines. Let's look into some. तो ये तो बाकी सब normal points है. You can read out. See here, scheduled caste and scheduled tribes are included under the weaker section category of PSL. That we are talking now. They are included in the weaker section category of PSL. ठीक है. So weaker section sub targets as per the RBI guidelines, the lending target for weaker section for domestic scheduled banks we have seen 12%. अभी कुछ देर पहले ही देखा. For regional rural bank it is 15%. For small finance bank and urban cooperative bank it is 12% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of balance sheet exposure, whichever is higher. ठीक है, उसका 12% they have to allocate in the weaker section of the society. ठीक है, और यहाँ पे small finance bank and urban cooperative banks, how much percentage they need to allocate for PSL? How much percentage they need to allocate of their lending? They need to allocate for PSL. Very good, 60%. Okay, for domestic commercial bank and foreign banks, how much percentage they need to allocate? 40%. Very good. For regional rural banks, how much percentage they need to allocate? 75%. Very good. ठीक है, चलो let's try to look into master circulars of RBI and SEBI published with respect to financial markets. Okay, financial markets कितने तरह के होते हैं मेजरली?
फाइनेंशियल मार्केट्स हाउ मेनी टाइप्स? इंडिया में 2 टाइप्स. वेरी गुड. क्या क्या है भाई? प्राइमरी मार्केट है ना, देन वी हैव सेकेंडरी मार्केट. जो आईपीओ का ट्रेडिंग होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है या सेकेंडरी मार्केट में होता है? यस, वेरी गुड. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है प्राइमरी मार्केट्स में होते हैं. और एफपीओ का ट्रेडिंग कहाँ होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी? नो चैतन्य, इट इज इन सेकेंडरी मार्केट. ओके. एफपीओ का फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स है ना, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स. अच्छा आप ये बताइए, कंपनीज दे इफ ए कंपनी वांट्स टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, तो which market it prefers, primary or secondary market? Okay. And what about the retail investors? If a retail investors wants to generate revenue, wants to generate book profit, then which market they need to focus? They wants to book profit. Okay. All right. Secondary market. It means exchange of securities. Exchange of securities take place in secondary market. We can buy or sell the securities. Securities can be क्या क्या भाई, टाइप क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, क्या क्या चीज आते हैं सिक्योरिटीज में? जस्ट मूव योर फिंगर्स. क्या है सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? शेयर है, बॉन्ड है, और कुछ है? सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, ओके, डिबेंचर्स. अरे भाई डेरिवेटिव्स है क्या, डेरिवेटिव्स? कोई नहीं लिख रहा है. ओके, श्रद्धा इज राइटिंग डेरिवेटिव्स. गुड गुड. डेरिवेटिव्स है, ठीक है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. हाइब्रिड सिक्योरिटीज के बारे में पता है आप? हाइब्रिड सिक्योरिटीज विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी फीचर्स. डेट का भी फीचर्स होगा, शेयर का भी होगा, है ना. वेरी गुड अरविंद. डेट एंड इक्विटी बोथ हाइब्रिड सिक्योरिटीज. म्यूचुअल फंड भी ट्रेड होता है क्या? म्यूचुअल फंड. वेरी गुड चैतन्य. म्यूचुअल फंड भी होता है, राइट. म्यूचुअल फंड भी होता है, ठीक है. यस, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओवर द काउंटर क्या होता है? ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट्स. दो तरह के मार्केट्स होते हैं ना. एक तो एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हमारा है, लाइक बीएससी. ओवर द काउंटर, यस, वेरी गुड. अनरेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होते हैं, वेयर पार्टिसिपेंट्स ट्रेड डायरेक्टली बिटवीन ईच अदर, है ना. पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टिसिपेंट्स P1 P2 दे कैन ट्रेड डायरेक्टली बिटवीन ईच अदर. ऐसा ओवर. तो ये है फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू. आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू, ठीक है. आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था क्या? इज इट आउट ऑफ कंटेक्स्ट और चलता है इतना? इट इज सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. एग्जामिनेशन है, बहुत सारा चीज देखना है ना. चलो. तो ये है लाइक दिस आर्टिकल नाउ. आरबीआई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्शन 2025 पब्लिश्ड ऑन 7th of January. For whom? For no NRIs. NRIs in debt instruments. NRIs in debt instrument important है भाई आपकी एग्जामिनेशन में, right? This directive consolidates and updates the framework governing how foreign portfolio investors, FPIs कौन होते हैं भाई? FPIs हॉट करेंसी, इसको ही बोलते हैं क्या FPIs को? हाँ, foreign portfolio investors which is more stable, like FDI
or FPIs? FDI is more stable. FPIs easy to fly from our country, right? अगर उनको profit दिखेगा in other countries, interest rate, if you see the interest rate is changing, other countries are performing like, but FDIs के साथ they have certain limitations, okay? Yes, they deal in equity only, shares में ही deal करते हैं ये. और FDIs जो है ना ये they are actually involved in major projects, जैसे infrastructure project, long term investments है. Yes, they run back easily in case of like in order to get more bond. तो उनके लिए directions है. For them, this direction. तो this framework also came with the FPIs and other non-residents and overseas citizens (OCIs) of the countries can participate in Indian debt market, replacing the previous regulations, including the foreign exchange management FEMA है regulation of 2019, right? So major takeaways from this circular, major takeaways, देखिए बहुत major takeaways I have highlighted in yellow set, right? RBI has introduced various avenues for NRIs. This includes the general route. देखो कितना तरह का rule RBI ने introduce किया है for non-residents to invest in Indian debt securities. In Indian debt securities, याद रखिएगा debt securities debt instruments के लिए है ये. All right, debt instrument जहाँ पे कर्ज होता है, okay? NRIs can invest in debt non-residents, not only NRIs. Non-residents में OCIs भी आएंगे, overseas citizen of India भी आएंगे, right? These include general routes, voluntary retention routes, and fully accessible route, and sovereign green bond framework. अच्छा, sovereign green bonds में कितना % interest है? Fixed interest rate. Sovereign green bonds में what's the interest rate percentage? SGBs के लिए कुछ है क्या? अच्छा, वो जनरल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा या कम होगा? You just tell me. जनरल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. क्यों? कम क्यों होगा? अरविंद इज सेइंग मोर होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों होगा? हाई, देखिए हाई सिक्योरिटी नहीं है. कि क्या होता है ना, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स है एक्चुअली ना, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लाइक ये इशू करता है सो दैट पीपल विल अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स द ग्रीनर इकोनॉमी, राइट? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, तो ये सब डेट सिक्योरिटीज है जो कि लाइक इशूड बाय आवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैक्ड है, राइट? यू कैन से दैट इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो हमारा एक ये भी है, पेरिस एग्रीमेंट में भी है, हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन में काफी हमने साइन किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनर इकोनॉमी. वी हैव आल्सो सेट ए टारगेट टू अचीव, राइट? यस, टू अचीव ए ग्रीनर इकोनॉमी, टू मेक कार्बन न्यूट्रल आवर कंट्री. तो ये सब प्रमोशनल बॉन्ड्स है, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ये प्रमोशनल बॉन्ड है. एंड फर्स्ट टाइम इट वाज इशूड इन द ईयर 2022, राइट? 2022 में फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, ओके? तो ये सब जो है ना, इंटरेस्ट रेट जो है इसमें अच्छा मिलता है, सो दैट पीपल कैन गेट मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू मेक स्पेंडिंग टुवर्ड्स द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ओके? यस, 2070 इज द टारगेट टू बिकम नेट जीरो, है ना? ये हमारा टारगेट है, इंडिया को नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनाना, कार्बन फ्री बनाने का 2070. तो इन ऑर्डर टू लाइक came with good steps towards the sustainable country, these sovereign green bonds are actually promoted by governments, they have government backing, तो उसमें interest rate will be good, ज्यादा रहेगा, ठीक है? उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, the one who is the bond holders, okay? कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं है. डिपेंड्स अपॉन द वेरियस गाइडलाइंस, डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज ऑल.
ठीक है, ओके। चलो, जनरल रूट्स में क्या आते हैं? नॉन रेसिडेंट्स कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, जस्ट लेट मी क्लीन द पेज, या non-residents can continue investing in government and corporate debt securities under this route, under the general route, adhering to predefined limits. Okay. The framework specifies the following caps for FPIs. FPIs के लिए this framework has announced certain caps. क्या है भाई cap? 6% of the outstanding stock of central government securities. वो है upper cap कि इतना तक up to then only they can invest for FPIs, right? 2% of state government securities, okay, and 15% of corporate bonds. Corporate bonds में 15% is the cap, the upper cap, right? Restriction on short-term investments with cap on securities with less than 1 year maturity. मतलब ये दिस इज द रेस्ट्रिक्शन फॉर एफपीआईज। ऐसा नहीं है कि भाई आप आओगे कंट्री में इन्वेस्ट करोगे और आप तुरंत से फ्लाई बैक कर जाओ, नो, you will be restricted for short term investments because somewhere it is going to like dismantle the economy at large, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ता है if we will see such type of volatility in financial market, therefore they are being restricted for short term investment with a cap on securities with less than 1 year maturity. जिसका less than 1 year maturity है, they have a certain caps on securities. Voluntary retention route के लिए क्या है भाई? VRR voluntary retention, अपने मन से वो रुकना चाहते हैं। कौन? FPIs, ठीक है, these non-residents voluntarily they want to retain. So RBI has allocated rupees 2.5 lakh crore for investment under this route with allotment conducted either through an auction process or on first come first serve basis. कितना allocate किया RBI ने? 2.5 lakh crore under this voluntary retention. So up to this much they can come. Okay, voice is breaking, Amit. Please check your internet connection. Is my voice breaking? Please confirm. Other students, is my voice breaking? Okay, Amit, you just check your internet connection, right? तो ये है voluntary retention route. Fully accessible route के लिए क्या है भाई? It allows the non-residents to invest in specified government securities without any investment restriction or limits. But these government securities, whether it is central or state, it is specified clearly in the documents itself. For fully accessible, there will be no investment restriction, upper cap nahi rahega like that is provided in the general route, or the limits will not be there, right? Sovereign green bonds, in line with the global sustainability, RBI has introduced the framework. These bonds eligible for investment through India's International Financial Service Center, IFSC, present a compelling opportunity for long-term sustainable investment in Indian market. So sovereign green bonds का trading जो है ना, foreigners means non-residents can trade in these sovereign green bonds, okay, through जो हमारा गुजरात में जो बेस्ड है इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, पता होगा आप लोगों को गुजरात में कहाँ पे एग्जैक्टली इन गुजरात? आईएफएससी कहाँ पे हेड ऑफिस इन गुजरात? गिफ्ट सिटी, यस, वेरी गुड, वहां पे। तो वो उसके थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में भी दे कैन इन्वेस्ट। तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट, ओके, ये दिस कैन केम एज एन इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो foreign investor non-residents can also invest in sovereign green bonds through IFSC. All right. Baki this capping which is there for the general route, important, 2% for state securities, 6% for central government securities, and 15% for corporate bonds. ठीक है? 2.5 lakh crore under the voluntary retention route booked by RBI.
क्लियर? चलो, यस, वेरी गुड चैतन्य, क्लियर है यहाँ तक? शुड वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल? राइट, नेक्स्ट आर्टिकल, access criteria for negotiated dealing system, order matching and NDS-OM directions. उसके लिए RBI के एक डायरेक्शन पब्लिश हुआ था on Feb 2025. Okay, access for SEBI registered non-bank brokers to NDS-OM. RBI has issued this new guideline under the master direction, allowing the SEBI registered non-bank brokers, SEBI registered non-bank brokers to get an access of negotiated dealing system order matching platform. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में दिस इज प्लेटफॉर्म, नेगोशिएटेड एनडीएस प्लेटफॉर्म, इसमें एक्सेस किनको मिल गया है? आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर्स। दिस इनोवेट्स क्यों मिला इनको? टू इनहैंस द रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, so that retail investors would be motivated to invest in government securities, which is fully backed by government entity itself. Low risk means high interest, right? These are less risky. Some of the key definition highlighted in this master circular. NDS-OM क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ऑथराइज्ड बाय आरबीआई ओनली। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में फंसा सकता है कि दिस NDS-OMS, क्योंकि आप जनरली फाइनेंशियल मार्केट में ये टर्म पढ़ते हो, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, राइट? बट इट इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई फॉर ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि दिस इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, नॉट सेबी, राइट? देन entities execute transaction directly on NDS and settle in their own subsidiary general ledger account. Okay, तो subsidiary general ledger account होना चाहिए in order to make the transaction and all, right? अब who are eligible for this NDS-OM? This is important for examination. That which entities are eligible? Banks, primary dealers, NBFCs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल बैंक्स में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है भाई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में? चलिए लिखिए आप कमेंट सेक्शन में, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन which 5 institutions I am talking about. NAIFIs, SIDBI, NHB, NABARD, EXIM, yes श्रद्धा ने लिखा, right, very good. NHB, NABARD, NABARD, EXIM and SIDBI. Good, very good. ठीक है, these are the 5 institutions coming under. So all India financial institution, these entities are also can directly access the NDS-OM platform. Mutual funds, provident fund, pension fund, ये आपको याद रखना. Here you can get confused. ठीक है, mutual fund, provident fund, pension fund. Then insurance company and market infrastructure institutions. So these entities got the direct access of NDS negotiated dealing system platform, right? जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, right? Authorized by RBI to trade for government securities. Okay, clear है? This you need to remember from this circular. Next article, RBI Electronic Trading Platform, ETP. ETP के लिए this circular was there in the month of June only. It was published for electronic trading platforms on June. ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी तक समझ में आ रहा चीजें? Things are getting cleared up, right? चलो, यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, बोल्ड किए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? दिस इज अ मास्टर सर्कुलर. क्यों इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ये सर्कुलर क्यों आया? Because in order to protect the retail investors of our country, in order to protect the small investors who are putting their hard-earned money into the financial market and they are getting cheated up, fraud हो रहा है उनके ऊपर. Therefore, this master circular actually came. Okay, in order to incorporate fair approaches on risk management, technology, and transparency of electronic trading platforms, so that
ट्रांसपेरेंसी एक मेंटेन रहे, राइट, so that a trust can be built among the investors over these such type of electronic trading platforms. Therefore this circular has been, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, तो उसके लिए ये सर्कुलर है. All non-recognized stock exchanges are allowed to operate electronic systems where eligible instruments such as securities, money market instruments, currencies, derivatives, and other products which the RBI may prescribe are being traded. Okay. With this new regulation of ETF, all the non-recognized stock exchanges are allowed to operate electronic systems. Okay, non-recognized stock exchanges. They can also operate the electronic systems. वहां पे trade up facilities they can give for securities, money market instruments, currencies, derivatives and other products जो कि RBI ने approve किया है. However, they have to meet the compliances with new provisions. अब ऐसा तो नहीं है कि खुला हाथ दे दिया. They have to meet certain compliances like commercial banks and standalone primary dealers that operate closed loop systems as sole code providers have limited exemptions but bear strict obligations on reporting and sharing information. Commercial banks or standalone SPDs को they have to share the information with the SEBI, right, with the RBI. Entities intended to start or continue the ETP operation are required to apply through RBI online प्रवाह portal. ठीक है, ये important हो गया. Those entities which are interested to start electronic trading platform, वो कैसे apply करेगा RBI को? प्रवाह portal. प्रवाह portal, last year it was there in the news. Many a time this platform is there in the news, so बहुत important platform है and we have discussed this lot of time while going through the current affairs classes. ठीक है, प्रवाह portal. They have to submit some certain annexure like corporate का structure कैसा है, ये these all non-recognized stock exchanges they have to submit certain information in प्रवाह portal to get the access to get the, ठीक है, to get the access. Yes, Vamsi, प्रवाह पोर्टल today only IBPS PO का मेंस में आया था. It is very important. ठीक है, प्रवाह पोर्टल RBI का वेबसाइट आप खोलोगे ना, you will find there RBI कहता है प्रवाह पोर्टल, ये सब आपको वहीं पे दिखेगा स्टार्ट. तो ये all the time it is there in the news, right? और उनको सबमिट करना होगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ओनरशिप पैटर्न, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एवरीथिंग they need to submit. Okay, in order to continue under the ETP operations. अगर ETP ऑपरेशन करना है उनको तो ये सब चीज उनको सबमिट करना होगा RBI के प्रवाह पोर्टल पे. ऑलराइट, और एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है ETP, ओके, जहां पे आपको फैसिलिटेट करता है दैट यू कैन ट्रेड इन सिक्योरिटीज. ये आपको याद रखना है, सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स or other products that is prescribed by RBI. It means RBI is the regulator of this ETP mechanism, electronic trading platform mechanism. All right, SEBI नहीं है यहाँ पे, okay, क्योंकि ये लोग नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जब रिकॉग्नाइज होता है ना, रिकॉग्नाइज मींस व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड बाय SEBI itself, बट यहाँ पे तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं ETP में, so they are being regulated, they are being monitored by RBI. याद रहेगा, RBI, ETP, trading electronically, electronic trading of what? Securities, money market instruments, derivatives and other products. ठीक है, ETP is defined as electronic excluding the external recognized stock exchange which facilitates the contracting of eligible instruments. Now, एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है भाई इसमें? इक्विटीज, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, ये हमने डिस्कस कर दिया. अच्छा, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने नहीं लिखा था,
तो ये भी एक एलिजिबल एंटिटीज है दैट कैन बी ट्रेडेड अंडर ईटीपीस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। These are the instruments that can be traded in these ETPs. Eligible criteria क्या है भाई? For corporates who are willing to start their trading in under the ETP platform, a minimum of two managerial personnel or the company must hold the position within a minimum of 3 years operational experience in financial market instrument. This is the minimum eligibility in order to start ETP. राइट, तो कंपनी का मिनिमम 2 मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए और कंपनी शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस इन फाइनेंशियल, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू possess a minimum net worth of 5 crore, minimum net worth of 5 crore which serve as a buffer against the market fluctuation or operational losses। ठीक है, तो उसको एक मिनिमम वर्थ net worth of 5 crore they need to maintain in order to see the as a buffer stock। ठीक है, ईटीपीज के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन ईटीपीज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने मेमोराइज किया अभी। प्लीज राइट, क्या क्या चीज आपने ध्यान रखना है आप विद रिस्पेक्ट टू दिस आरबीआई सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू ईटीपीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। व्हाट यू नीड टू मेमोराइज, इट इज जस्ट रिविजनल एक्सरसाइज ना, कितना पढ़ोगे यार, बार बार मैं पीडीएफ दे ही दूंगा आप लोगों को। जस्ट मूव योर फिंगर्स। यस 3 years, वेरी गुड चैतन्य। ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। 5 crore मिनिमम नेटवर्थ, वेरी गुड वेरी गुड। प्रवाह पोर्टल, वेरी गुड शिवम, प्रवाह पोर्टल भी होना चाहिए। 2% एट मैनेजरियल पर्सनल, नेटवर्थ 5 crore। 5 crore तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इनको मेंटेन करना फॉर बफर स्टॉक। यस वेरी गुड श्रद्धा। नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, एटीपीज आर नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस regulated by who? RBI is the monitoring body, right? वेरी गुड, चलो याद हो गया, खत्म काम, है ना। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस अंडर द फेमा। ये क्या है भाई, बार बार गलती कर रहे हैं। ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, देन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इन केस ऑफ सच ऑफेंसेस। उसके लिए दिस मास्टर सर्कुलर वाज देयर। ठीक है, key aspects including consolidated existing instructions incorporating the new FEMA compounding procedure rule and adding this is compounding amount of 2 lakhs। ठीक है, तो की अपडेट्स अंडर दिस मास्टर सर्कुलर क्या है भाई, कैप ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट, वो याद रखना हमें। न्यू अमेंडमेंट अलाउज द कंपाउंडिंग अथॉरिटी टू कैप द मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट of rupees 2 lakh on each contravention in given application, specifically for other non-reporting contraventions, right? तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है भाई कंपाउंडिंग के लिए, ऑफेंस के लिए 2 लाख ऑन ईच कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, फेमा में अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1990। ठीक है, एक जनरल ये था, लाइक सर्कुलर था। नेक्स्ट, ओवरसीज परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट 81 कैपिटल नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट है ये। 81 कैपिटल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम आल्सो इट वाज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस ईयर आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। इन सितंबर 2025 आरबीआई रिलीज दिस डायरेक्शन फॉर 80। 80 क्या होता है भाई, 80 क्या होता है, प्लीज टेल मी 80 क्या होता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में इट वाज देयर, या एडिशनल टियर क्या होता है, कितना परसेंटेज है एडिशनल टियर क्या होता है। टीयर 1 का कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, टीयर 1 क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल बताओ। बेसल नॉर्म्स का है, यस। जो आता है वो बताओ। यस वेरी गुड शिवम, इट इज मोस्ट लिक्विड,
यूज फॉर एनी डिस्ट्रेस, राइट, वेरी गुड, ठीक है, टीयर 1 कैपिटल है ना. It actually shows the financial health of that bank, that whether it can sustain in case of emergency or not. ठीक है, मोस्ट लिक्विड, इजी अवेलेबल है, राइट. बेसल ने सेट किया था 8%, यस. आरबीआई ने सेट किया 9%. ओके, ठीक है. और क्या पता है आपको? यस, यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, बैकअप है वो बैंक्स का, राइट. अच्छा, ये जो है वो कौन सा कमिटी था इन्वॉल्व था इसमें, लाइक कैन यू रिकॉल दैट कमिटी which recommended to set up this bank board bureau, जिसका ये था, लाइक कौन कमिटी था? पीजे नायक कमिटी सुना है आपने? पीजे नायक कमिटी, somewhere it is associated with that bank board bureau, right? पीजे नायक कमिटी, है ना? ओके. और कुछ आप लोगों को याद है? कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो का. क्या होता है भाई कैपिटल एडुकेसी रेशियो? दैट अ बैंक नीड टू मेंटेन, जो 9% 8% बोल रहे हैं ना आप लोग, वो एक्चुअली कैपिटल एडुकेसी रेशियो है. बेसल हैज सेड कि बैंक नीड टू मेंटेन a capital adequacy ratio of 8%. RBI say no, 10% they need to maintain. क्या है भाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? याद है आप लोगों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? इसका एक फॉर्मूला है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, यस, वेरी गुड चैतन्य, डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स. जो एसेट्स विच हैज रिस्कियर है, ठीक है, दो एसेट्स आर, वो डिनोमिनेटर साइज में होता है. ये अगर ज्यादा हो गया तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो कम होगा. ओके, banks are being asked to maintain this ratio at 9%. If this risk associated with the assets that bank is lending, if it is become more, तो क्या होगा? It will automatically go down. So therefore आरबीआई का गाइडलाइंस है कि बैंक हैज टू प्रॉपर्ली रीचेक, ओके, मॉनिटर करना है in which section they are providing the loans, which are the criteria categories they are providing of the loans, whether those loans are categorized in the stress assets, whether they will turn into NPAs, right? So you have to put a check over the risk management system of your bank as well. तो इसको जो है ना कम करना है, राइट. अगर ये कम होगा तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो ये बढ़ेगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कैपिटल एडुकेशन रेशियो रिस्क वेटेड एसेट्स? अब ये एडिशनल टीयर 1 कैपिटल क्या होता है भाई? 81. व्हाट इज दिस 81? चलो यहाँ तक क्लियर है तो ये बता दो, जैसे सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप. क्या होता है ये 81? शिवम इज राइटिंग पी बॉन्ड. यस, वेरी गुड, परपेचुअल बॉन्ड है ये. वेरी गुड, पी बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड. आई गॉट योर पी बॉन्ड टर्म. लाइक इसका कुछ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग होता है या फिक्स होता है? तो दीज आर perpetual bond that carries a fixed coupon payable annually from past or present profit of the bank. जो बैंक का जो पास्ट और प्रेजेंट है ना, जो प्रॉफिट है, उससे एक फिक्स्ड कूपन, फिक्स्ड रेट, इट शुड बी पेमेंट पेबल एनुअली, राइट. यही है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल.
ओके, टीयर 1 कैपिटल में तो वो कोर बैंक कैपिटल होता है, बट एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, ओके, आई थिंक यहाँ पे लिखा है क्या, इधर भी नहीं लिखा है, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड याद रखिएगा, वो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, these are perpetual bonds which carries, we can say, which carries a fixed coupon, which carries a fixed coupon, okay, which is payable annually by the bank, obviously depending upon the past record of the bank and present record of the bank, performance of the bank, right? वही है 81। टीयर 2 कैपिटल क्या होता है यार? टीयर 2, हम्म, what is this tier 2 capital? Counter cyclic CRB debt, क्या होता है टीयर 2 कैपिटल? इफ बैंक इज वाइंडिंग अप इट्स एसेट्स, ठीक है, बैंक रन हो गया, बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो वहां पे जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टीयर 2 कैपिटल, ओके। ठीक है, बैंक रिजर्व, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर इज डिफरेंट थिंग, वो एक बेसल 3 का एक वी कैन से एलिमेंट है, बेसल 3 नॉर्म्स का, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायरमेंट एट गुड टाइम्स, ड्यूरिंग गुड टाइम्स, अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक तो उसका कैप बढ़ा दो भाई, उसमें रिजर्व अपना बढ़ाओ, ठीक है, फॉर देयर बैड डेज, राइट, तो वो अलग चीज है। चलो, तो 81 कैपिटल नॉर्म्स के लिए, दिस परपेचुअल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आरबीआई हैज मेड सर्टेन चेंजेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यू लिमिट, दिस डायरेक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October 2025 and it is applicable to all the scheduled commercial bank and regional rural banks and sorry, all scheduled commercial banks excluding small finance bank, payment banks and regional rural banks. So these three banks are being excluded under this new direction. Other than that, all scheduled commercial bank are being covered in this direction, in which the limit for perpetual debt has been raised actually, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, और ये जो एक्सक्लूजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और आरआरबीज आर excluded from this direction of RBI Basel III Capital Regulations PDI, the perpetual debt instruments in additional tier 1 capital direction 2025, ठीक है। New limit issued in foreign currency or rupee denominated bonds overseas shall be eligible for inclusion in 81 capital up to maximum amount of 1.5% of risk weighted assets as per the latest available financial statement। कितना है भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स का, कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 1.5%, लिखो यार लिखो, 1.5%, राइट, ऑफ व्हाट, ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अभी याद कर लो इसको, डॉक्यूमेंट आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट, लेकिन याद कर लो, अभी क्लास से बैठे हो ना तो बस याद हो जाना चाहिए, ओके। यही 1.5% आएगा एग्जामिनेशन, ओके। shall be eligible for inclusion in 81 capital up to maximum amount of 1.5% of risk weighted assets। हमने पढ़ लिया ना कॉन्सेप्ट रिस्क वेटेड एसेट्स का, आरडब्ल्यूए का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, एसेट्स जो बैंक का है उसमें कितना रिस्कियर है, राइट। अच्छा, जो बैंक आपको लोन्स देता है, लोन्स जो देता है वो एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है बैंक का? लाइबिलिटी है या एसेट है बैंक?
लोन्स, वेरी गुड, वेरी गुड, एसेट होता है, राइट, क्योंकि वो तो रिकवर करना है ना उसको। बैंक का लाइबिलिटीज क्या होता है? टेल मी सम एग्जांपल्स, बैंक का लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, सेविंग्स, हाँ, जो डिपॉजिट हमने किया है सेविंग फॉर्म्स में, है ना। बैंक भी बोरोइंग करता है, पता है आप लोगों को? बैंक्स आल्सो यूज टू बोरो, दोज आर आल्सो liabilities of the bank, right? Equities of the shareholders, बैंक में भी आप परचेज करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंजेस में जाके, एसबीआई का खरीद लिया, तो इक्विटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स आर आल्सो व्हाट? लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, राइट? शेयर होल्डर इक्विटीज, दीज आर आल्सो लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है, क्लियर? चलो, याद रहेगा ये चीज, 81 बॉन्ड के लिए 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए, क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट एंड कॉइन, एकदम छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April, बैंक आर आल्सो एक्सेप्ट द स्मॉल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 25 पैसा कॉइन। मेनी ऑफ यू हैड नॉट सीन दिस 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन भी होता था पहले, राइट? तो उसके अलावा बैंक बैंक इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू एक्सचेंज वॉट एवर यू हैव ब्रॉड। 50 पैसा का कॉइन भी अगर लेके आए तो उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट? मैंडेटरी, ऑल बैंक ब्रांचेस मस्ट एक्सेप्ट एंड एक्सचेंज द सॉइल मल्टीलेटेड, जो फटा चीटा है, गंदा हो गया, पुराने नोट्स है, इम्परफेक्ट नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द पब्लिक, नॉट जस्ट देयर ओन कस्टमर्स। अपने कस्टमर से नहीं बट जनरल पब्लिक से भी उनको लेना पड़ेगा। कौन से फटे चिटे नोट, पुराने गंदे नोट्स, राइट? या फिर कॉइन्स above 25 पैसे, above 25 पैसे, this is the direction. Customers who have an issue can first complain to bank branch. If the issue is not resolved within 13 days, they can escalate their complaint to the RBI ombuds. Ombudsman होता है ना, RBI का ombudsman, इंटरनल, क्या है iOS पता है आपको? ombudsman स्कीम, इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम, कौन कौन, इफ इट इज नेम इंटीग्रेटेड तो क्या क्या इंटीग्रेट हुआ था इसके अंदर? इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम में क्या क्या इंटीग्रेट हुआ था बताइए? हाँ, 2021 का था ये सरदार, वेरी गुड। क्या क्या इसमें हुआ था इंटीग्रेट? 3 स्कीम इंटीग्रेट हुआ था, वेरी गुड सरदार। डिजिटल एनबीएफसी एंड बैंकिंग, यस, बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो 2019 का था, राइट? वो तीनों ombudsman इंटीग्रेट हुआ था और आरबीआई केम विद दिस इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम ऑफ 2020 iOS, ठीक है, वेरी गुड। चलो, याद है आपको, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज है आरबीआई का, ombudsman ये वो आता रहता है, न्यूज में आता रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ काउंटरफिट नोट्स, काउंटरफिट नोट्स मतलब जाली नोट, जाली नोट, पैरेलल इकोनॉमी, काउंटरफिट करेंसी, फेक करेंसीज, काउंटरफिट करेंसीज, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये गाइडलाइन, द काउंटरफिट नोट्स। अच्छा, दिस आल्सो डिस्कस्ड इन आरबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस टुडे। कौन सा, ये काउंटरफिट या फिर ombudsman स्कीम आईओएस? क्या आया था एग्जाम में आईबीपीएस पीओ में आज? अच्छा, काउंटरफिट नोट्स विद दिस मास्टर सर्कुलर, ऑल राइट, ऑल राइट। तो काउंटर कैसा गया आप लोगों का, मेंस कैसा हुआ आईबीपीएस पीओ का? अच्छा, you can personally call me in order to say, right? अभी क्लास attempted 19, good, ठीक है, attempt, ठीक है। तो काउंटर नोट्स कैन बी impounded by, क्या क्वेश्चन था, what was the exact question? What was the exact question?
अब रिगार्डिंग दिस काउंटरफिट नोट, क्या क्वेश्चन था? क्या स्टेप लेना चाहिए बैंक टू अपॉन रिसीविंग द काउंटरफिट नोट? देखिए, यही है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ काउंटरफिट नोट्स। क्या क्या रिपोर्ट कर रहा है? तो काउंट आर impounded बाय ऑल बैंक्स, इशू ऑफिस ऑफ आरबीआई, डायरेक्शंस काउंटरफिट नोट, राइट? This should be tendered or destroyed by the bank branches itself. ओके, यही है ना आंसर इसका फिर तो। If they fail to detect the counterfeit notes, मतलब बैंक, if banks fails to detect the counterfeit notes और वो अगर सर्कुलेशन में आ गया, तो penalty will be imposed on that particular bank, right? Okay, they have to destroy at their end only. ठीक है, यही हो गया ना आंसर इसका तो। What they will do first? Avamsi, was it the option that they have to destroy it first at bank branch itself? What is the option? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सर्कुलर। अच्छा, डिस्ट्रॉय वाज द ऑप्शन ना। देखो, मैंने यहाँ ये चीज इसलिए बोल्ड कर दिया बिकॉज ये सारे पॉइंट्स में यही इंपॉर्टेंट है। तो जो बोल्ड है और हाईलाइटेड है, दैट यू हैव टू एटलीस्ट रीड फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलो। स्कीम फॉर पेनाल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस एंड करेंसी चेस्ट, मास्टर सर्कुलर। पेनाल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस एंड करेंसी चेस्ट। ठीक है, करेंसी चेस्ट क्या होता है भाई? जहाँ पे पैसा रखा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इशूड ए कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर, इट शुड बी, हाँ उसको इन्फॉर्म करना होगा उसको। बैंक को नहीं, बैंक डिस्ट्रॉय नहीं करेगा श्रद्धा, वो आगे बढ़ाएगा उसको, लेकिन उसको कलेक्ट करना है, वो सर्कुलेशन में नहीं आना चाहिए वो पैसे। ठीक है, वो, अच्छा मैंने बोल दिया था क्या? तो इन नो केस वो डिस्ट्रॉय बैंक ब्रांच नहीं करेगा, वो आगे बढ़ाएगा, उसको सर्कुलेशन में नहीं डालना है, अपने पास रख के उसको आगे बढ़ाना है, राइट? स्कीम फॉर पेनाल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस एंड करेंसी चेस्ट, ठीक है। इशूड ए कंप्रेहेंसिव मास्टर सर्कुलर outlining the penalties for bank branches and currency chests that fail to deliver adequate customer services. Okay, key penalty provision. See a currency handling deficiency, rupees 50 per piece penalty for shortage in soil note remittances and multi-rated note, face value penalty of rupees 100 and above, denomination shortages, or penalties for failure to detect the counterfeit notes as per the RBI norms, जो उस पर्टिकुलर बैंक को लगेगा, right? In case of fail to operational non compliances, करेंसी चेस्ट मेंटेन करना ना बैंक ब्रांच में, करेंसी चेस्ट जहां पैसा रखा रहता है बैंक में, राइट? उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस उनको बैंक्स को फॉलो करने हैं, उसके लिए आरबीआई ने ये डायरेक्शन इशू किया है कि करेंसी हैंडलिंग में डिफिशियंसी रहेगा तो उसमें इतना इतना पैसा पेनाल्टी लगेगा पर पीस। इन केस ऑफ शॉर्टेज इन स्वाइल नोट रेमिटांसेस, ठीक है, कोई बंदा लेके आया पुराना नोट, स्वाइल नोट्स, और उसको आपको देने के लिए नया नोट नहीं है, रेमिटांसेस नहीं है, ठीक है, तो उसमें 50 रुपए का फाइन लगेगा ऑन पर पीस। 500 का भी नोट होगा तब भी 50 रुपए, और 50 रुपए का नोट होगा तभी 50 रुपए, ठीक है। फेस वैल्यू पेनाल्टी 100 रुपीज एंड अबव, डिनोमिनेशन शॉर्टेज, इन केस ऑफ डिनोमिनेशन शॉर्टेज मतलब 500 का नोट का डिनोमिनेशन का शॉर्टेज है अगर,
50 रुपीज का डिनोमिनेशन का शॉर्टेज है, अगर 100 रुपीज का डिनोमिनेशन का शॉर्टेज, तो वहां पे फेस वैल्यू पेनाल्टी 100 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है। ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंसेस में अगर बैंक के एंड पे ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंसेस हो रहा है, ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे वो 5000 फाइन फॉर नॉन फंक्शनल सीसीटीवी सिस्टम। बैंक में अगर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो 5000 का जुर्माना है उनके ऊपर, 5000 फाइन, और 10,000 इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस। 5000 फाइन लग गया, फिर दूसरे दिन वही काम हो रहा है, फिर से सीसीटीवी नहीं बना तो 10,000 फाइन ऑन रिपीटेड ऑफेंस, राइट। सर्विस डिलीवरी फेल्योर, बैंक में अगर सर्विस डिलीवरी हो रहा है, फेल्योर हो रहा है, तो 10,000 पेनाल्टी फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स और रिफ्यूजल टू एक्सचेंज, एडजुडिकेट, सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट्स। कितना फाइन है बैंक के पास के ऊपर? 10,000 पेनाल्टी। ओके। एक्सक्लेशन टू 5 lakhs आफ्टर 5 सच वायलेशन। अगर 5 बार बैंक ने वायलेट कर दिया एंड दे रिफ्यूज टू एक्सचेंज योर सॉइल्ड मनी, ठीक है, पुराने गंदे मनी को रिफ्यूज कर दिया बैंक एक्सचेंज करने से, तो उसको 10,000 का फाइन, और 5 बार अगर ऐसा हो गया तो द फाइन मे एस्केलेट टू 5 लाख रुपीज। ऑलराइट। रिपोर्टिंग लैप्सेस में फ्लैट 50,000 पेनाल्टी फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ नेट डिपॉजिट फ्रॉम करेंसी चेक्स। कितना? 50,000 पेनाल्टी फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ नेट डिपॉजिट्स। ओके, so these are some of the directions issued by RBI. Okay, coming to the next article, penal provisions for reporting of transaction and balance sheet as guarantee chest. इसके लिए what are the penal provisions? See here, penal provisions. The requirement for reporting the currency chest transaction are part of RBI's master circular. ठीक है, penal provisions है इसके लिए। ये T+0 currency chest must report all the transactions via CYMCC portal by 7 p.m. on same day, means T+0 platform. By this on same day, T+0, right? Minimum transaction amount, any transaction involving a deposit or withdrawal from currency chest must be for a minimum of rupees 1 lakh and subsequently in multiple of rupees 50,000, right? Minimum transaction amount of 1 lakh and subsequently in multiple of 50,000. ठीक है, ये आपको याद रखने, मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट और रिपोर्टिंग टाइम जो है T+0, सेम डे। सारा जो भी करेंसी चेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो सेम डे रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव्स फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम। इसके लिए फ्रेमवर्क्स आरबीआई अपडेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर ओनली, September 2025, although circular was published in 25th of April, but it got updated in September 2025. So what are the key framework, key aspect of this with respect to currency distribution and exchange scheme? CDESS, इसके लिए क्या है भाई? As of October 1st, 2025, new services charges apply to cash deposit by non-chest branches to currency chest. The new charges are rupees 8 per 100 pieces of notes for large modern chest and rupees 5 per 100 pieces of notes for other chest. Okay, this is the updated charge. 8 रुपए लगेंगे for 100 pieces of notes of large modern chest and 5 रुपए लगेंगे for 100 pieces of notes for other chest. Okay. Purpose: to encourage all bank branches, including the currency chests, to provide better customer service by exchanging the soil notes and distributing coins. This is the purpose behind this move. Now, coming to the next article with respect to agency banks and payment of agency commission. This
दिस सर्कुलर इज विथ रिस्पेक्ट टू बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बैंक्स। ठीक है, उसके सब हेडिंग्स में आ रहा है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस बाय एजेंसी बैंक्स। तो आरबीआई हैज इशूड ए नोटिफिकेशन रिवाइजिंग द एजेंसी कमीशन रेट payable to banks for conducting the government businesses effective from 1st of April 2025 as part of revised commissioning rate। क्या क्या है भाई रिवाइज, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेट? दिस यू नीड टू रिमेंबर। फिजिकल रिसिप्ट ₹40 per transaction, electronic receipt ₹12 per transaction, pension payment ₹80 per transaction, other payment non-pension 0.0 rupee per 100 rupees of transaction value। Okay, this is the revised commission rate. This is the revised rate for conducting the government business। किसके लिए? एजेंसीज के लिए। एजेंसी के लिए कमीशन रेट रिवीजन हुआ है, आरबीआई ने रिवाइज किया है। ठीक है, additional clarifications, agency commission will now be applicable to all the payment transactions handled by agency banks except transactions that are pre-funded cases where the government already compensates the bank separately। ये दोनों केस छोड़ के all agency commission will be applicable to all the payment transactions handled by agency banks और यही इस रेट पे वो कमीशन चार्ज होंगे उसके ऊपर। ठीक है, फिजिकल रिसिप्ट के केस में ₹40 पर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट के केस में ₹12 पर ट्रांजेक्शन, पेंशन पेमेंट्स के केस में ₹80 पर ट्रांजेक्शन और अदर पेमेंट्स नॉन पेंशन के लिए 7 पाइस पर ₹100 ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये 7 पाइस जो है ना, ये आप याद रखना पर ₹100 ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, बाकी भी याद रखना। क्लियर? Government pension by agency banks requires electronic verification of payment, pension payment orders and integration with the Jeevan Praman digital life certificates। Okay, monthly pension disbursement data must be submitted to Central Pension Accounting Office। Non-credit of pension within due dates attracts 1,000 per day penalty till resolution by to be borne by concerned banks। Okay, next, cooperative banks. With respect to cooperative banks, we will discuss the important circulars। Okay, agency banks. Amit is asking what is agency? Any one of you in the class who wants to answer this question, agency bank क्या होता है? Please write in the comment section। Then I will explain। Any one of you? Yes, very good, Shraddha। These are authorized by bank to conduct the government businesses, right? Government businesses, on behalf of government, whether it is state government or like central government, है ना, दोनों government के behalf में काम करने, वो है एजेंसी बैंक्स। उसी के लिए ये सर्कुलर है कि अगर उनके द्वारा कुछ ट्रांजेक्शन होता है, राइट, तो दे हैव टू पे द कमीशन। ठीक है, अब जल्दी से लिख दो, आप कमेंट में लिखो कि क्या क्या कमीशन दे हैव टू पे if they make any sort of transaction। Just write in the comment section। I want each and everyone to write in the comment section। Let me check कि आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता है। Giving you 1 minute time। Yes, 0.07 per 100 transaction, per 100 rupees transaction, not per 100 transaction। This is the volume amount। Okay, 100 रुपए में इतना कमीशन। बाकी भी था ना, फिजिकल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, पेंशन ट्रांजेक्शन। याद नहीं आ रहा है?
अभी तो पढ़ाया। ओके, चैतन्य हैज रूट ₹10 40 रिसिप्ट, ई रिसिप्ट 12, पेंशन 100, अदर 0.07। वेरी गुड, ठीक है। ये चेतन प्रॉम्प्टली रिप्लाई किए आपने, वेरी गुड। चलो, आप सब लोगों को लिखना था ये चीज, बिकॉज इससे रिकॉल कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन के टाइम पे, राइट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉर दिस सर्कुलर इज देयर, exposure norms and statutory other restrictions for other urban cooperative banks, उसके लिए this circular is there, right? चलो, what is this circular all about? Individual and group borrowers, individual and group borrowers, exposure to an individual borrower should not exceed 15% of bank's tier 1 capital. Exposure to group of connected borrowers should not exceed 25% of bank's capital, tier 1 capital. All right, ठीक है, याद रखना है। This you need to remember. Exposure to individual borrower should not exceed 15% of tier 1 capital, और group borrowers के लिए should not exceed 25% of bank's tier 1 capital. Unsecured advances के लिए total unsecured loans and advances granted to members must not exceed 10% of total assets. One student is talking about this ना, unsecured loans and advances 10% से ज्यादा exceed नहीं होना चाहिए, right? Specific sector, exposure to housing, real estate, commercial real estate is capped at the upper capping, but the maximum 10% of the total assets, with an additional 5% allocation possible for housing loans, housing alone, right? उसके लिए एक additional capping है 5%, मतलब 10 plus 5%, okay? Maximum तक जा सकता है, ठीक है? UCBs के लिए this norm is there for urban cooperative banks, ठीक है? Clear? चलो फटाफट लिखो, what you have gained from this circular with respect to UCBs, statutory and other restrictions over the UCBs, what you have gained from this master circular, फटाफट लिखिए आप लोग। yes, 5%, 25%, secure 10%, 5 additionally 5% for housing alone, right? Very good, Amit, very good. Yes, single exposure it is 15%, it is not 20%, Siddha, it is 15%. Group exposure 25%, individual not more than, very good, unsecured, right? Chalo, housing finance urban cooperative banks, housing finance urban cooperative banks, बहुत important article, बहुत important circular, you can expect one question from this, issued on 1st of April, all right. A rated FEB इतना updated specified that tier 1 urban cooperative, कितना तरह का urban cooperative banks होता है, 4 tiers के होते हैं, right? On divided on the basis of deposit tier 1 UCBs deposit up to 100 crore, tier 2 deposit between 100 to 1000 crore, tier 3 deposits between 1000 to 10,000 crore, and tier 4 deposit above 10,000 crore. All right, इससे RBI ने कैटेगराइज किया था on the basis of deposit. UCBs are categorized in this four tier structure, okay, on the basis of deposit. उसके लिए है ये सर्कुलर आया है कि रिवाइज हुआ है, रिवाइज लोन लिमिट्स हैज बीन रिवाइज्ड फॉर यूसीबीज, कि कितना लोन दे सकते हैं वो लोग फॉर टियर 1 यूसीबीज अप टू 60 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट, अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 60 लाख, टियर 2 अप टू 1.4 करोड़, tier 3 up to 2 crore, tier 4 up to 4 crore per dwelling units. This has been revised 60 lakh, 1.4, 2, then 3 crore. ठीक है? This is the revised update.
per residential person to per dwelling unit. Exposure, the circular also includes revised prudential norms such as caps on aggregate exposure on residential mortgages up to 25% and real estate के लिए 5% of total advances for UCBs. ठीक है? Now फटाफट write what you have learned from this circular. UCBs का circular क्या क्या revise हुआ है? Just write in the comment section. Write in the comment section. Yes, 60 lakh, 1.4, 2 and 3 for respective year. यही है per dwelling unit, means per residential unit, right? Okay. Key provisions. Second article with respect to UCB only. Prudential norms on capital adequacy. क्या है भाई ये वाला? देखो ये पार्ट, इसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? सी minimum capital to risk assets ratio CRAR. UCBs must maintain a minimum CRAR on ongoing basis as follows. Tier 1 UCBs 9% of risk weighted assets, they need to maintain 9% of CRAR of risk weighted assets, or tier 2, tier 3, tier 4 they have to maintain 12% of risk weighted assets. ठीक है? Under this CRAR, capital to risk weighted asset ratio. Tier 2 to tier 4 that were not meeting 12% requirement were given a phased timeline to comply, which culminates on 31st of March 2026. Okay, so this is the timeline till which they have to meet this 12% of RWAs. Because हमने देखा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बहुत सारे जो loans है, that those loans are turning into NPAs. ठीक है? Therefore, RBI has put certain restriction on all those big UCBs जिसका 100 crore से ऊपर का डिपॉजिट है, like tier 2, 3 and 4. Okay, उनके लिए restriction है 12% of RWAs they need to maintain. Minimum net worth requirements क्या होना चाहिए? With the deadline of up to 31st of March 2028, the minimum net worth they have to maintain is 2 crore for tier 1 UCBs and 5 crore for tier 2, 3 and 4 UCBs, right? UCBs that do not meet these levels must reach at least 50% by 31st of March 2026 and full amount by 31st of December 2028. 50% कब तक मीट करना है उनको? कमिंग ईयर 31st मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली दे हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ये दोनों डायरेक्शन with respect to UCBs? Is it clear? Clear to everyone? All right. कंपोनेंट्स हैं कैपिटल के, टियर 1 टियर 2 कैपिटल. ठीक है, पढ़ लेना आप. रिस्क मैनेजमेंट. ऑलराइट. The prudential norms require UCB to maintain the capital against the 3 main type of risk. Obviously, risk associated है, तभी तो उनको RBI ने ये किया है that you have to maintain certain for CRAR के लिए कुछ मेंटेन करना है और कुछ पैसे मेंटेन करने हैं आप. ठीक है? Why? In order to mitigate the risk associated with UCBs like credit risk, जो वो वो आप लेंड करते हैं, मतलब बोरोवर्स के एंड पे जो रिस्क है, like concentration risk, default risk and collateral risk. Second type of risk like market risk, and third one is operational risk. UCB must obtain a robust operational risk management framework to cover the potential losses of failed internal processes. Right? तो क्या आपको मिला इस आर्टिकल से, इस सर्कुलर से? what you can recall, please write in the comment section. I'm giving you 1 minute time. What you can recall from this article? This is the last circular that I have discussed today. Tomorrow I will discuss in the next session, right?